Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the entitled theme Limitations of Classical Conditioning Theory. Dear students, in today's lecture, we will focus on the various limitations. I mean to say you what are the various loopholes or drawbacks of the classical conditioning theory, which is propounded by Russian-born psychologist, namely Ivan Pavlov. There are the various limitations of the theory. The major limitations or drawbacks of the theory are highlighted as under. Number 1. Organism is passive. Dear students, keeping in view the classical conditioning theory, organism is the passive because organism has to wait for the situation. जैसे कि हम सब जानते हैं, the classical conditioning approach is known as S type of approach, or it is based on the S type of learning. It means every behavior is represented by the stimulus. क्योंकि stimulus के बगैर हम responses हासिल नहीं कर सकते हैं. Every response is basically the result of stimulus. जब तक कि हम organism को conditioned stimulus बेल नहीं रिंग करेंगे, तब तक एक organism रेस्पॉन्स नहीं दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा. जब तक कि हम आइसक्रीम एक इंडिविजुअल को नहीं दिखाएंगे, तब तक उसके मुंह में पानी नहीं आ सकता है. इट मीन्स थ्रस्ट इज पर्टिकुलरली ऑन टू द स्टिमुलस बिकॉज विदाउट द स्टिमुलस नीदर द बिहेवियर कैन बी एक्सप्रेस्ड nor the responses can be generated. One of the eminent another behavioral psychologist, namely B.F. Skinner. B.F. Skinner has highly criticized the classical conditioning approach. क्योंकि classical conditioning approach में organism passive है और B.F. Skinner का मानना है organism is the active. It may be any animal or human being. On the basis of one's own initiatives, organism has tendency to explore the environment. उसे environment का वेट करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने initiatives पे वो environment को explore कर सकता है, manipulate कर सकता है, operate कर सकता है. As we know that B.F. Skinner's approach is known as R type of approach. I mean to say you जो learning concept B.F. Skinner ने दिया है, that is based on responses. It means without the stimulus and response mechanism, we can emit the responses from the organism. यानी कि stimulus और response mechanism के बगैर भी एक इंडिविजुअल जो है या कोई भी और ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, वो अपने बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हाथ को ऊपर करना है, नीड नॉट दैट आई नीडेड ए स्टिमुलस, यानी कि हाथ खड़ा करने के लिए मुझे किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है. अगर इंडिविजुअल को बैठना है, बैठने के लिए कोई स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है. या इंडिविजुअल को कुछ पीना है, पीने के लिए यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पहले खाना दिखाएंगे. या पर्सन वांट्स टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, और एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें पहले उसे स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इंडिविजुअल इज़ एबल टू ऑपरेट द एनवायरनमेंट ऑन द बेस ऑफ वन्स ओन initiatives. इसीलिए B.F. Skinner का मानना है कि every organism in this environment is active, not passive. As per B.F. Skinner's approach is concerned, it means that focus is on to the responses, while as
classical conditioning approach, it means focuses onto the stimulus. Stimulus is primary. It means every behavior is represented by means of stimulus. So that is why it was the one of the big flaw found in classical conditioning theory, that classical conditioning theories treated every organism as passive agent. Number second, focus on simple learning. Dear students, with the help of classical conditioning theory, we can help to the individuals to learn the simple learning skills rather than the complex learning skills, because theory is based on lower order of the learning instead to the higher order of the learning. इस थ्योरी के जरिए हम सिंपल हैबिट्स या सिंपल स्किल्स बच्चों को सिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को सिखा सकते हैं हाउ टू मेक ए नेल हाइजीन, हाउ टू मेक ए डेंटल hygiene, how to wash the clothes, how to dress, how to sit, how to walk, how to comb the hair, how to clean the clothes, how to keep the shoe, how to wash or clean your utensils. So these skills can be taught to the children. Dear students, apart from it, we can teach to the individuals to learn how to drive the car, या ब्रिक मेकिंग का स्किल हम उन्हें सिखा सकते हैं, या इसके बगैर भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्किल्स सिखा सकते हैं. On the other hand, the theory has completely neglected to learn the complex skills, क्योंकि complex skills सीखने के लिए कॉग्निशन की जरूरत पड़ती है, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग अप्रोच है इट नेग्लेक्ट्स द कॉग्निशन. इस थ्योरी के जरिए हम बच्चों को कंपाउंड मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकते हैं, ज्योमेट्री नहीं सिखा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा सकते हैं, या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखा सकते हैं जहां पर हमें कंप्रहेंशन की जरूरत पड़ती है. हम बच्चों को इस थ्योरी के जरिए इनोवेटिव और डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखा सकते हैं, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ लर्निंग्स नीडेड द cognition. I mean to say you problem solving ability, and there is no scope for problem solving ability in case of classical conditioning theory. Dear students, as we know that there is one of the eminent theory which is known as insightful learning. Insightful learning is that theory which is propounded by the Gestaltian school of psychology. They believe on higher order of the learning. I mean to say you problem solving approach. Problem solving approach is that approach in which the individual tries to solve the problems independently with the use of higher cognitive abilities. That is known as insight. इसीलिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का क्रिटिसिज्म हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ फोकस करती है लोअर ऑर्डर ऑफ स्किल्स पे. हम जीनियस बच्चों को, गिफ्टेड बच्चों को, क्रिएटिव बच्चों को क्लासिकल कंडीशनिंग अप्रोच से नहीं सिखा सकते हैं, वो लर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे टेकिंग द टेस्ट्स एंड इंटरेस्ट्स in order to perform the higher order of the learnings rather than the simpler or lower order of the learnings. ये theory जो है it helps to the mentally retarded children and by and large slow learners. Slow learners और mentally retarded बच्चों को simple tasks इस theory के जरिए हम सिखा सकते हैं, and this theory has having the least provision for the normal children and by and large gifted and genius children. Number third, overemphasis on role of environment. Dear students, as we know that environment plays the important role in order to shape the behavior of an individual. ये कहना है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का,
Classical conditioning theory is one of the behavioral theory which primarily believes onto the environment. यानी कि विदाउट द इन्वायरमेंट हम एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर ट्रेन नहीं कर सकते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म को लर्न नहीं करवा सकते हैं. इट मीन्स ऑल द लर्निंग्स आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट. दैट इज वाई वन ऑफ द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, जिसका जिक्र हमने बहुत से वीडियोज में किया भी है प्रीवियस वीडियोज में, J.B. Watson, who is being considered the father of behaviorism, and his famous dictum is that give me one dozen of healthy children, I will make them whatever you want. Child becomes doctor, child becomes engineer, child becomes thief, by and large child becomes vagabond. It means it is not the heredity which decides the fate of the individual. It is simply the environment which plays important role in order to shape the behavior of the learner. Or apart from the J.B. Watson, there is another environmentalist, namely the John Locke. John Locke's famous dictum is, child's brain is like a tabula rasa, where the environment पेन डाउन्स और राइट्स द मैसेज. यानी कि एक इंडिविजुअल का जो ब्रेन है, आई मीन टू से यू जो ह्यूमन चाइल्ड का ब्रेन जो है वो लाइक है टेबुला रसा है, क्लीन चिट की तरह है या कोरे कागज की मानंद है, जिस पे इन्वायरमेंट अपनी मैसेज लिखता है. यानी कि इन्वायरमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू लीड द इंडिविजुअल और ह्यूमन चाइल्ड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग के लिए ज़रूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जब तक कि थिंकिंग मैच्योर नहीं होगी, जब तक कि एक इंडिविजुअल में इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्ड नहीं होगी, या कन्वर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग और डाइवर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग डेवलप्ड नहीं हो सकता है, तब तक कोई भी लर्निंग पॉसिबल नहीं है. ये मानना है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स का, ये मानना है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स का. इसीलिए कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज थ्योरी लेज ओवर एम्फेसिस ऑन रोल ऑफ द एनवायरनमेंट. जहाँ तक कि एक ह्यूमन पर्सनैलिटी की बात है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी. So far as classical conditioning theory is concerned, it has neglected the role of heredity or genetics. इसने role of heredity और genetics का neglect किया है. So we can here say that it has having the big lacunas. इस theory में big lacunas है, इस theory में loopholes और drawbacks है, क्योंकि इसने सिर्फ environment की बात की है. It is the environment which leads an individual towards the perfection. It is the environment which results the learning. और यहाँ पर जो हेरिडिटी का रोल है या जेनेटिक्स का रोल है वो इस थ्योरी ने कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मेंटली रिटार्टेड बच्चे की बात लेंगे, मेंटली रिटार्टेड बच्चे में कॉग्निटिव डेफिसिट्स होते हैं, एंड इट हैज़ रिसर्चिकली प्रूव्ड दैट mentally retarded child can only learn the lower order of the skills. वो lower order of the skills सीख सकता है. I mean to say you mentally retarded children vis-a-vis the slow learners, they can only learn the simple tasks. जैसे कि हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, mentally retarded बच्चों में cognitive deficits होते हैं by birth, और उन कॉग्निटिव डेफिसिट्स की वजह से वो सिंपलर टास्क्स लर्न करते हैं, सिंपलर हैबिट्स सीखते हैं. फॉर एग्जांपल, किस तरीके से नेल हाइजीन मेंटेन की जाती है, किस तरीके से दांतों की हाइजीन मेंटेन की जाती है, किस तरीके से हेयर को कॉम्ब किया जा सकता है, वगैरह वगैरह. ये सिंपलर टास्क्स एक आई मीन टू से यू मेंटली रिटार्टेड या स्लो लर्नर सीख सकता है. स्लो लर्नर और मेंटली रिटार्टेड बच्चे डोमेस्टिक स्किल्स, घर के काम कर सकते हैं, यानी कि
शाली की कटाई, शाली की छुबाई या घर में कोई लेबर वर्क है वो सीख सकते हैं। बट टू बिकम द डॉक्टर, टू बिकम द इंजीनियर, दैट टू गो फॉर द हायर एजुकेशन, इट इज़ नॉट द कप ऑफ मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन इंजीनियरिंग के स्किल्स नहीं सीख सकता है, वो मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग के स्किल्स नहीं सीख सकता है, वो कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। दैट इज वाई बिग फ्लॉ हैज फाउंड इन द थ्योरी, बिकॉज इट ओनली लेज रोल ऑफ environment which result is the learning, and by and large neglect is the role of, I mean to say you, heredity and genetics. In another angle, dear students, we can say that जहाँ तक कि हेरिडिटी का सवाल है या जेनेटिक्स का सवाल है, हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। अगर जेनेटिक मेकअप किसी बच्चे का वीक होगा तो कितना ही इन्वायरमेंट हम यहाँ से इंड्यूस क्यों ना करेंगे तो लर्निंग नहीं हो सकती है, परफेक्शन की बात ही नहीं है। वी कैन नॉट लीड द लर्नर टूवर्ड इज द परफेक्शन इफ देयर लाइज डिफेक्ट in the genetics, I mean to say you, if there is the genetic deformity. जैसे कि हम सब जानते हैं, the theory has by and large neglected the role of neurotransmitters and hormones. Neurotransmitters are those chemical substances which carry the message from one nerve cell to the another nerve cell. Dear students, there are various types of neurotransmitters, like dopamine is neurotransmitter, serotonin is neurotransmitter, epinephrine is neurotransmitter. These neurotransmitters carry message from one nerve cell to the another nerve cell. अगर यही neurotransmitters फंक्शन नहीं करेंगे तो ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट जो ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। कोई भी काम करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री में होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी जिक्र किया है और आज भी ये पॉइंट दोहरा रहे हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्राइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब एक इंडिविजुअल में यही न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टॉप फंक्शन करता है, ऑटोमेटिकली इट लीड्स एन इंडिविजुअल इन द साइकोलॉजिकल स्टेट, जहाँ पर एक इंडिविजुअल डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और अदर टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज खड़ा हो जाते हैं, या पूरी जो बॉडी केमिस्ट्री एक इंडिविजुअल की है वो असरअंदाज हो जाती है। So here we can say that so far as classical conditioning theory is concerned, it overemphasizes the role of environment and by and large neglects the role of heredity and hormones. Number 4th, mechanical orientation of learning. Dear students, as per the another lacuna or drawback of classical conditioning theory is concerned, it lays emphasis on mechanical orientation of learning. यानी कि जो learning है it is mechanical in nature. Mechanical means when you are performing the tasks without the involvement of the cognition or least involvement of the cognition, that is known as mechanical. It means man is treated like a machine. एक human being जो है वो machine की तरह है। हम एक ह्यूमन बीइंग को मशीन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, मशीन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन विच ईच एंड एवरी पार्ट इज इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड टू वन अनदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अगर मशीन के किसी पार्ट में कोई डिफेक्ट होगा तो वो मशीन सही तरीके से काम नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक गाड़ी की मिसाल लेंगे, आई मीन टू से यू 4 पहियों वाली गाड़ी की मिसाल लेंगे, दैट इज वन ऑफ द मशीन्स। और अगर गाड़ी का हर एक पुर्जा जो है वो सही होगा,
Each and every part of the machine vehicle is interconnected, interlinked in an organized form. हर कोई उसका औजार जो है वो परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो मशीन खुद नहीं चल सकती है, क्योंकि एवरी मशीन वर्क्स ऑन ह्यूमन एफर्ट्स। अगर हम एक कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, एंड कंप्यूटर परफॉर्म्स द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मिलियंस और ट्रिलियंस की कैलकुलेशंस वो सेकंड में करता है। लेकिन कंप्यूटर एज ए मशीन itself is nothing because it works on human efforts. कोई भी दुनिया में ऐसी मशीन नहीं है जो ह्यूमन एफर्ट्स के बगैर चलती है। It means every machine which you have to run or operate, it needed the human effort. Without the human effort, machine can't perform any type of टास्क। चाहे हमें कोई भी काम क्यों ना करना होगा, सिंपल टास्क से लेके कॉम्प्लेक्स टास्क तक अगर हमें अंजाम देने हैं, लेकिन उन कामों को हम ह्यूमन एफर्ट्स के बगैर नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए मशीन के पीछे जो है वो एक ह्यूमन बीइंग का हाथ है। तो so far as classical conditioning theory is concerned, it has emphasis on mechanical orientation of learning. Man is like a machine, और एक ह्यूमन बीइंग को हम मशीन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मशीन जो है ये खुद एक ह्यूमन एफर्ट पे चलती है, ह्यूमन बीइंग्स पे चलती है। अदरवाइज मशीन का कोई भी मोल इटसेल्फ नहीं है, इसका मोल कुछ भी नहीं है विदाउट द hand of the human beings. So that is why classical conditioning theory has been highly rejected vis-a-vis that the condemned, because it is overemphasis on man is like a machine. Number 5th, developed on animals. Dear students, as per classical conditioning approach is concerned, the theory has been developed on animals. क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है, एवान पेवलो बीइंग एज एन न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट, he conducted the series of experiments on various animals, और जो उसका फेमस एक्सपेरिमेंट था that was known as experiment conducted on dog under the experimental conditions. किस तरीके से एवान पेवलोव ने एक अनट्रेन्ड डॉग का बिहेवियर यानी कि मॉडिफाई और मोल्ड किया, किस तरीके से अनट्रेन्ड डॉग को ट्रेन्ड बनाया गया है। When the Ivan Pavlov has conducted the experiment, that experiment is known as classical conditioning theory. जहाँ तक कि बिहेवियरल थ्योरीज आर कंसर्न्ड, इन थ्योरीज को फॉर्मुलेट किया गया, डेवलप किया गया when series of experiments has conducted or observations has done on certain types of animals, चाहे वो dogs थे, rats, pigeons, cats, so on and so forth. So far as classical conditioning approach is concerned, the theory has been especially formulated when the experiment has conducted on the dog. On the basis of that experiment, the experimenter propounded the theory which is known as classical conditioning theory. तो यहाँ पर इस थ्योरी का क्रिटिसाइज किया गया है। जब ये थ्योरी एनिमल्स पे बनाई गई है तो किस तरीके से हम इस थ्योरी के लॉज को अप्लाई ह्यूमन बिहेवियर पे कर सकते हैं। Because dear students, if we will make comparison between the human beings and animals, there is the hell of the difference. Human psyche और animal psyche में आसमान और जमीन का फर्क है। एनिमल के बिहेवियर और ह्यूमन के बिहेवियर में बहुत सा फर्क है। एक एनिमल जो है वो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, बिकॉज देयर इज अ बिग गैप in between the potentials, capacities, capabilities of human beings vis-a-vis the animals.
एनिमल का नेचर एक होता है, ह्यूमन बींग्स का नेचर एक होता है। एनिमल्स में एक टेस्ट पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में दूसरे टेस्ट पाए जाते हैं। Moreover that animals don't have self-realization, while as human beings possesses the self-realization. एनिमल्स में सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होती है और ह्यूमन बींग्स में सेल्फ डेवलप्ड होता है। किस तरीके से एनिमल्स पे जो थ्योरी डिज़ाइन की गई है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके लॉज, या हम कह सकते हैं फाइंडिंग्स ऑफ द थ्योरी can't be generalized on human beings. We have already discussed there is the difference between human psyche and animal psyche. Animal psyche जो होती है उसमें लिमिटेड थिंकिंग कैपेसिटी होती है, रीजनिंग लिमिटेड होती है, न होने के बराबर। ऑल द कॉग्निटिव competencies are very much weak among the animals so far as human beings are concerned. Human being is called the ashraful makhlukat. Man is being considered the crown of the creation. Man को क्यों crown of the creation कहा गया है? Because humans possesses well developed brain, और highly developed brain of animals में नहीं पाओगे। It is only the human being who possesses the highly developed brain. उनमें highly cognitive competencies developed होती है। चाहे हम रीजनिंग की बात करेंगे, whether inductive reasoning और deductive reasoning, या थिंकिंग की बात करेंगे, convergent mode of thinking, divergent mode of thinking. Divergent mode of thinking means creative ability possessed by the human beings, और ये creative potentials एनिमल्स में मिसिंग होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रियली enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.